Hello, good morning students. Welcome back to our e-learning session and this is your second lecture of chapter number 11 bank reconciliation statement. In accounts, I told you in our last session that in accounts 1 to 10 chapters are important because that is the very important chapter because here that chapter is used not only by the owner of the business, here that all the accounts and all this process is used by the other, that is the stakeholders or the users of the business, competitors of the business, government, etc. all are used that accounts, but this is only for this chapter, that is bank reconciliation statement is only for the use of the owner because he has to find out the difference between the cash book balance, cash book, bank account, bank column balance and the passbook balance, passbook bank balance or bank overdraft. Here the difference is there if we want to find out the causes or the reasons for the difference, then we have to prepare bank reconciliation statement, and in that case bank reconciliation statement the rules are most important. I told you in my last session that first I was give you the first rule also, that is the starting point of the practical sums is bank balance as per cash book, bank balance as per passbook, bank overdraft as per cash book and bank overdraft as per passbook. Okay, so I hope you all remember that which balance, debit balance or credit balance, which balance, I hope you all remember that. Now here we want, see, in our last session we complete up to 1 to 6 point and I told you that you have to read the 7th point, that is reasons for difference for the bank balance between cash book and passbook. I told you that, and I hope that you all read that also. Okay, now we will discuss the reasons, as well as on the basis of that reasons we are preparing one rule. See, here the rule is not given, it is prepared by me, that is the rule. Here the reasons, on the basis of the reasons given we have to prepare one rule. If this type of transactions is done in cash book or in passbook, then what we have to do, that is we have to debit it or we have to credit it in bank reconciliation statement, right? So whenever the reasons is given, here what 10 to 12 reasons are given, on the basis of these reasons we are writing out the rules regarding how to prepare the bank reconciliation statement, or in bank reconciliation statement how we make an entry, debit entry or credit entry, if these type of situations is given into the question. Okay, see that now we are reading that, we are starting our 7th point, reasons for difference for bank balance between cash book and passbook. Sorry. When a trader enters into the transactions with the bank, he records the same in his cash book and bank. After recording the same in passbook, gives it to the trader. See, when one trader enters with the transaction with bank, right, he records the same in his cash book. I am a trader, I am recording all the transactions in the cash book, as well as at that the same time bank also record this transaction in his passbook, in this passbook, right? So here at the same time when one transaction is done, two parties, that is two different parties, that is trader as well as the banker, both record same transactions at the same time. I am debited, bank credited, I am credited, bank debited, only opposite side entry, but the entry must, each and every transaction must be recorded by both the parties, compulsory, right? At the same time. But therefore at any time if the bank balance is verified, it should be the same as per the cash book or passbook at any time. For example, as on 31st/3/2019, debit balance as per cash book, that is bank balance, is rupees 5,000.
then on the same date, credit balance as per passbook, bank balance must be 5,000. As per cash book, if the balance is 5,000, that is debit balance, that is bank balance. At the same time, in the passbook, if we see that the bank balance rupees 5,000 as it is credit balance, bank balance as per passbook, that is credit balance, bank balance as per cash book, that is debit balance. Side is only changed, but the amount must be tally 5,000, 5,000. Same, because all the transactions is recorded same time in the cash book as well as in the passbook. So the answer, so you can say the total of the balance must be tally, right? But in the normal circumstances, this does not happen because of various reasons which are as given on the next page. Here some reasons is given. On the basis of that some reasons, here the difference between two balances, that is balance of cash book as well as balance of passbook, is given here. The circumstances, the reasons are given here, and on the basis of this we have to find out the difference, the causes, the reasons why the balance is not tallying. Okay, so see that first reason, check deposited into the bank but not credited by the bank. See the circumstances, I am just explaining you, and then we will be writing the rule for that. Check deposited, I am taking a check from the party, I am deposited on Friday 4 o'clock, 4 p.m. right, 3 or 4 p.m. I am deposited that check on to the bank, right? See the what is the procedure in the bank. If I am deposit any check before 2 p.m., generally before 11 or 12 p.m., 12 noon, right? Before 12 noon or before sometimes in some private bank before 2 p.m. if you are depositing any check, then your check is now cleared on the next day. But if you are depositing the check on at the time of closing of the bank, that is 4 to 5 p.m., then here it is cleared in the next, it is go to the clearance for the next day, and it is clear in the next day, right? That's why we see that here on Friday, Saturday, Sunday, maybe second and fourth Saturday, Sunday is holiday for the bank. If I am depositing that particular check on Friday evening, that is 4 to 5 p.m., between 4 to 5 p.m., and Saturday, Sunday is the second Saturday, Sunday on the next day, that's why 2 days are the holidays, so that my check is go to for the clearance on the Monday, right? So on Monday, if it is goes for clearance, it is cleared or transferred to my account on Tuesday. So what is the meaning of this? Here I am depositing my check on Friday, but it is credited to my account on Tuesday, right? And between that, the month is over or the fortnight is over, 15 days is over. Then what? I am preparing a bank reconciliation statement. What is that? At that same time, whenever I am deposited on Friday, I am deposit the check to the bank. At the same time, I am recording that check in my passbook. Okay, see this is okay. Sometimes the problem regarding the language is there, we already discussed about that. So here the theory portion, here the explanation portion as well as the theory portion is there. That's why I am explaining you this portion, this point, these all the reasons in Hindi and English, both the language. Okay, so see that मैंने कहीं से एक चेक लिया, किसी पार्टी के पास से चेक लिया, और वो चेक मैंने कहां पे किया, डिपॉजिट करवाया, बैंक पे डिपॉजिट करवाया, मगर वो फ्राइडे को मैंने डिपॉजिट करवाया और वहां पे 2 दिन के हॉलीडेज है, सैटरडे संडे, मंडे को वो क्लियरिंग में जाएगा और ट्यूसडे को मेरे पास वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा, राइट? सो फ्राइडे टू ट्यूसडे 5 दिन लगे मेरे अकाउंट में वो पैसे आने के लिए, और मैंने कब लिखा, in the cash book I am recording that transactions on that particular day, that is on which day I am depositing the check, I am recording that check.
राइट. सो हियर 5,000 और 10,000 रुपीज का अगर कोई चेक है तो मैंने फ्राइडे को वो मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया, मतलब कैश बुक में आज वो फ्राइडे मेरे अकाउंट में एंट्री हो गई. कैश बुक में 5,000 सी बैलेंस इंक्रीज हो गई क्योंकि चेक इज डिपॉजिटेड, तो बैंक की बैलेंस 5,000 से बढ़ गई. ठीक है, मगर बैंक में अभी कोई एंट्री हुई नहीं है. कब होगी उसमें एंट्री? ट्यूसडे को जब वो क्लियर होगा तब वो एंट्री होगी. और बिटवीन दैट अगर मंडे को मेरा फोर्थ नाइट एंड हो रहा है तो मैं चेक करूंगा कि चलो भाई कैश बुक की बैलेंस कितनी है और पासबुक की बैलेंस कितनी है. तो चेक बुक में बैलेंस होगी, उससे कैश पासबुक में बैलेंस 5,000 कम होगी. व्हाई? बिकॉज द लास्ट चेक which I am deposited on Friday is not now recorded in the bank in the passbook. Why? But because it is not clear up to this date. It is clear on Tuesday and on Monday I am recording the bank reconciliation statement. Right? मैं मंडे को देख रहा हूं कि चलो भाई बैलेंस कितनी है कैश बुक की बैलेंस है 55,000. यस. और वहां पे पासबुक में जाकर देखता हूं तो पासबुक में बैंक बैलेंस कितनी है 50,000. व्हाई? 5,000 का मेरे कैश बुक में बैलेंस इंक्रीज हो रही है, वहां पे 50,000 है, यहाँ पे 55,000 है. व्हाई द डिफरेंस इज देयर? बिकॉज ऑफ दिस रीजन. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक. दिस इज द रीजन. वहां पे हमको एक चेक मिला था, मैंने वहां डिपॉजिट करवाया, मगर बैंक को अभी उसके जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर में से सैटरडे संडे हॉलीडे हो गया, मंडे को वो क्लियरेंस में गया और ट्यूसडे को वो क्लियर होकर ट्यूसडे को आपके अकाउंट्स में क्रेडिट होने वाला है. अब नहीं होगा, नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है. वो कहीं पे मिस हो गया ऐसा कुछ नहीं है. ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर 2 दिन चलती है. दैट इज द प्रोसीजर बट यू हैव टू फॉलो दिस. बट हियर इफ आई एम इन बिटवीन दिस देन हियर ये हमारी जो फोर्टनाइट है या फिर ये कह सकते हैं कि अगर ये हमारा मंथ एंड हो रहा है और मंथ एंड को हमको ये जो रिकंसिलिएशन बनाना है, डिफरेंस फाइंड करना है कि कैश बुक में कितनी बैलेंस है और पासबुक में कितनी बैलेंस है. अगर हमको वो डिफरेंस फाइंड करना है तो वो रीजंस होना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट रीजन दैट चेक इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. At the same time, I am recording whatever the check or cash is deposited into the bank. At the same time, I am recording or trader recording in the cash book. जब भी वो डिपॉजिट करने जाएगा तभी उसको एंट्री कर देगा कि चलो भाई आज इतने रुपीस कैश डिपॉजिट किया, आज इतना चेक डिपॉजिट किया इनटू द बैंक. बट अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो क्या करेगी बैंक? क्रेडिट नहीं करेगी. हमको क्या करना पड़ेगा? यस, नाउ द रूल्स रिगार्डिंग दैट. हमने क्या किया था? सी, व्हेनेवर चेक इज रिसीव्ड, हमको पार्टी से चेक मिला था, राइट? दैट्स व्हाई इट इज अ रिसिप्ट एंड इट इज recorded in the cash book on which side? Receipt side. That's why debit side. और बैंक को क्या करना था? वो बैंक ने क्लियरली यहां पे बोला है चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक. बैंक को वो क्रेडिट करना था, बैंक ने अब तक किया नहीं है. ट्यूसडे वो करेगी, नहीं करने वाली, ऐसा नहीं बोला है. सिर्फ हमको तो रीजन ही फाइंड करना है कि रीजन क्या हुआ. रीजन ये हुआ कि 4 दिन बीच में आगे हॉलीडेज आ गए तो क्लियरेंस में जाने के लिए थोड़ी देर हो गई. तो जब तक हम बैंक रिकंसिलिएशन बनाते थे तब तक वो क्रेडिट नहीं हुआ है. नेक्स्ट डे हो जाएगा. मगर अभी के लिए जो 5,000 का डिफरेंस आ रहा है वो कहां से लाएंगे? मतलब वो रूल से लिखेंगे कि हमको जो बैलेंस थी, सी वी हैव टू स्टार्ट द सम विद द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. मैंने अभी बोला आपको 55,000 की कैश बैलेंस थी, राइट? और उसमें हमको ये पता चला कि वो डेबिट बैलेंस थी और ये पता चला कि बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है, हमने डेबिट कर दिया. 5,000 check deposited. Whenever receipt is there, we have to debit it, right? And if we are debiting it, then bank has to credit it. But if bank is not credited, then we have to credit it. Means what? In short, you have to write down the second rule. Rules regarding bank reconciliation statement. First rule we already written. Now the second rule. Check deposited but not credited by
bank, and the answer what we have to do in the bank reconciliation statement, credit. This is the answer. Directly, whenever in the transaction, in the question, the given word is that check deposited but not credited by bank, or check deposited but not recorded by bank, the word is changed. See, check deposited but not credited by bank, or check deposited but not recorded by the bank here, or not presented by the bank. All this new different word is the same, only you have to concentrate this. Check deposited, we are depositing a check, but bank is not recorded, bank is not credited, bank is not in the bank, it is not presented. All the different words are there, but the situation is same. Check deposited but not recorded by the bank. Here the word, important word is by bank. Bank is making a mistakes right now. We are doing our well done job, regular, okay. But bank is not recorded these transactions into the passbook, okay. So here at that time we have to credit this amount in the bank reconciliation statement. So you just have to remember that which transaction is credited and which transaction is debited. On this is the rules, right? First situation is given, that situation, in that situation, if this situation is given into the question, then you have to just credit that particular amount given. Check deposited but not credited by the bank. If check deposited of rupees 10,000 and not credited by the bank, then you have to credit rupees 10,000 in the bank reconciliation statement, nothing else. Just a simple one. See, you don't have to refer all these stories. ये मैंने जो भी आपको स्टोरी बताई कि यहाँ से मैंने डिपॉजिट चेक लिया, चेक लेकर मैंने बैंक में डिपॉजिट करवाया, बैंक को 3-4 दिन लगे डिपॉजिट करने के लिए, बिटवीन दैट हमारी रिकंसिलिएशन की डेट आ गई, हमने रिकंसिलिएशन किया, यहाँ की और वहां की बैलेंस डिफरेंस आ गई, और उस डिफरेंस का रीजन मिल गया कि भाई चलो हमने वो जो चेक डिपॉजिट करवाया था वो बैंक ने अभी तक डिपॉजिट किया नहीं है. ये सिचुएशन है, ये स्टोरी है, मगर उसमें हमको करना क्या है अभी प्रैक्टिकली. अब हमको रिकंसिलिएशन में क्या करना है, नाउ आई एम राइटिंग आउट दैट इज दैट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. हमको ये याद रखना है, ठीक है. चलिए, नाउ आई एम रीडिंग दैट. सी, टुवर्ड्स द रिकवरी ऑफ द ड्यूज, when a trader received a check, he deposited the same in the bank. At this time, it is recorded on the debit side of the cash book. जब हमको रिसीप्ट मिलती है, रिसीप्ट कौन सी साइड आएगी, इन द कैश बुक. डेबिट साइड इज द रिसीप्ट साइड एंड द क्रेडिट साइड इज द पेमेंट साइड, राइट. तो हमको किसी के पास से अगर कोई चेक मिला है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा ऑलवेज इन द कैश बुक, राइट. Considering that bank balance increased because of deposit of a check in the bank, but generally bank does not give the credit for the same on the spot. On the spot वो नहीं होगा, वो तो दूसरे दिन ही क्लियरेंस में जाएगा, राइट. Bank gives the credit of the amount of check to the trader only after it recovers the amount of that check. वो वहां से क्लियरेंस में जाएगा, मतलब क्या होगा, वो पार्टी के बैंक अकाउंट में जाएगा. मतलब अगर हमारा कोई पार्टी ने मेरा अकाउंट एसबीआई में है और जिस पार्टी ने मेरे को पेमेंट किया है उसने बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक दिया हुआ है, तो मैं उसका चेक मेरी बैंक में डिपॉजिट करूंगा, तो क्या होगा, तो पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जाएगी, उस पार्टी का अकाउंट देखेगी कि भाई चलो इतना अकाउंट में उसके पैसे हैं, यस हैं, तो चलो लाओ ट्रांसफर कर दो मेरे को. उस पार्टी ने बोला है कि भाई इस पार्टी का अमाउंट इस पार्टी को मिलेगा, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा स्टेट बैंक को वो रुपए दे देगी, और बाद में एसबीआई हमारी स्टेट बैंक हमारे अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट करती है. ये प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड क्लियरेंस. ये क्लियरेंस किया टाइमिंग होता है, एक दिन लगता है क्लियरेंस के लिए. बैंक गिव्स द क्रेडिट ऑन द सेम अमाउंट ऑफ चेक टू ट्रेडर ओनली आफ्टर इट रिकवर्स फ्रॉम द अमाउंट ऑफ दैट चेक. Therefore, for the time between the check deposited into the bank and actually credited by the bank, difference arise in the bank balance as per both records. यहाँ पे जो टाइमिंग लगता है क्लियरेंस का टाइमिंग, इन शॉर्ट ये जो प्रोसीजर बताइए वो क्या है, क्लियरेंस का टाइमिंग जो होता है वो टाइमिंग
In between that, here the bank balance is changed. Okay. Example is given. For example, 1/3/2019 bank balance as per cash book and bank balance as per passbook is 2000. Now a check of rupees 5000 is received on 4/3, that is 4th March, and immediately it is deposited in the bank. Credit for that this is given by the bank in the passbook 6th March. 4th March को मैंने एक चेक डिपॉजिट करवाया, मगर बैंक ने वो डिपॉजिट किया, क्रेडिट किया 6th मार्च को. अगर मैं 5th मार्च को ये बैंक रिकंसिलिएशन बना रहा हूं, तो बैंक रिकंसिलिएशन में मेरी और बैंक की बैलेंस में 2000 प्लस 5000, हियर 7000 मेरी बैलेंस होगी, वहां पे 2000 ही बैलेंस होगी. क्यों? वहां पे क्रेडिट नहीं हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट हो गया. जिस दिन डिपॉजिट कराया उसी दिन एंट्री हो गई. सो 4th मार्च को एंट्री हो गई, तो 4th मार्च को बैलेंस हो गई 2000 प्लस 5000, दैट इज 7000 4th मार्च को ही. और वहां पे कब होगी? 6th मार्च को जब क्लियर होगा, 6 मार्च को जब बैंक क्रेडिट करेगी, तब वहां पे बैलेंस 7000 होगी. तब तक मतलब 5th के लिए अगर मैं 5th को मैं वहां पे जाऊंगा और टैली करूंगा, तो मेरी बैलेंस और वहां की बैलेंस में 5000 का डिफरेंस आएगा. सी दैट here in this case on 4th March, when trader deposit the check in the bank, it will be recorded on the debit side of the cash book and bank column, and bank balance as per past cash book will be increased by rupees 5000. Therefore the bank balance on 4th March as per cash book is rupees 7000, but bank does not give any credit for the same on 4th March, and therefore bank balance as per passbook on that date will remain only 2000. On not only 4th date, on 5th date also. 5th March it is the balance is 2000 as it is, right? This will be the difference of rupees 5000 in the bank balance as per cash book and as per passbook. The reasons is that the check is deposited by the bank, but the bank has not give any credit for the same. That is check deposited but not credited by the bank, and here we have to credit it. Here we have to write down the rules also for that. If this type of transaction is given into the question, then you have to just credit the amount whatever given into the question. Okay. Now the second opposite of this, check issued but not presented for the payment. I am check issued. That means what? I am issued a check. See the story behind this reason. I am issue one check to my creditor. मैंने अपने creditor को एक 10,000 का check लिखा. I am issue that here, and I am also given that to the party on the same day. I am written the check and I am given that check particular the 5,000 or 10,000 rupees check on the same day to the party. And I am recording that particular check that is issued in my cash book. मैंने वो भी लिया कि भाई मैंने इस पार्टी को सो एंड सो पार्टी को 10,000 रुपीज दिए. कैश बुक पेमेंट साइड, आई एम रिकॉर्डिंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑन द इन द बैंक कॉलम, राइट. बट वो पार्टी है वो भूल गया, वो उसने चेक लिया, चेक लेकर उसके काम में लग गया. 2-3 दिन वो भूल गया कि चेक उसके पास है. चेक उसको उसकी बैंक में डिपॉजिट करना जाना पड़ेगा. उसकी बैंक मेरी बैंक के पास आएगी कि भाई लाओ चलो भाई, उसकी पार्टी ने बोला है कि चलो आपको पैसे देने हैं, तो मेरी बैंक उसको पेमेंट कर देगी. चेक देखेगी और चेक देखकर उसको पेमेंट कर देगी, तब मेरे अकाउंट में से निकलेगी और उसके अकाउंट में जाएंगे. मगर अगर वो भूल गया है, मतलब उसने चेक लिया और चेक वो उसके पर्स में ही रह गया, पॉकेट में ही रह गया, और 2 दिन भूल गया, 2 दिन के बाद वो बैंक में गया, उसको वहां पे बैंक अकाउंट में प्रेजेंट किया, और प्रेजेंट करने के बाद भी मैंने बोला 1 दिन तो प्रोसेस में लगता ही है, वो वहां पे जाएगा, क्लियर तो नेक्स्ट डे ही होगा. तो नेक्स्ट डे मतलब 3 दिन तक वो चेक मेरे अकाउंट में आया ही नहीं है. मतलब क्या हुआ, मेरे अकाउंट में बैलेंस डिक्रीज नहीं हुई है. मैंने अभी कर दी, मैंने ऑन द स्पॉट लिख दिया ऑन द कैश बुक पेमेंट साइड, दैट इज दिस चेक इज issued. That's why here my bank balance is decreased now
on the same day, same time. Here I am recording that 10,000 is decreased from my bank column, right? But at the same time, here the balance is not decreased from my bank balance, that is from my passbook bank account, right? So here the difference is there, and at the same time here this difference must be recorded on the debit side in the bank reconciliation statement. This is the rule. Okay, so what is the rule? Check issued but not presented for the payment, here we have to debit it. Okay, so that please write down this rule. I am reading the situation. Second situation, check issued but not presented for the payment. In order to pay dues, when a trader draws or issue a check in favor of any person, he immediately records in on the credit side of the cash book in the bank column, and thereafter bank balance as per cash book will decrease. I told you that. Here what happened? I am giving a check to my party, and on the spot this check is recorded on the payment side of the cash book, and my bank balance as per cash book is decreased. Okay, but till the person to whom the check is given present it into the bank for its payments, and bank makes actual payment, bank balance as per passbook does not decrease. जहां तक वो जाए उसके पास, वो अपनी बैंक में प्रेजेंट करेगा, अब उसकी बैंक है, वो मेरे बैंक के पास आएगी और चेक उसके पेमेंट की लेकर जाएगी, तब तक के लिए मेरी बैंक बैलेंस में कोई चेंज नहीं होगा, वो डिक्रीज नहीं होगी, राइट? सो इन बिटवीन दिस 2 or 3 days, here the bank balance is not decreased in the passbook, but bank balance is immediately decreased in the cash book. कैश बुक में वो ऑन द स्पॉट जो मैंने पेमेंट कर दिया वो डिक्रीज हो जाएगा, वहां पे बैंक ने नहीं किया, क्योंकि बैंक के पास कोई लेने ही नहीं आया। बैंक के पास अगर कोई बैंक लेने आती है, उसकी पार्टी की बैंक लेने आएगी तो ही वो लेस करेगी ना, तो ही वो डिक्रीज करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। दैट्स व्हाई हियर therefore time lag between the check drawn, that is issued. Word drawn or issued, two different words are there. Please underline these two words, check issued or check drawn, both are same, right? So check drawn oblique issued and presented into the bank for payment, difference will arise in the bank balance as per cash book and as per passbook. So for example, as on 20th March 2019, bank balance is 4,000 as per cash book as well as passbook. On the same day, check of rupees 1,000 is drawn in favor of the creditor, which is presented for the bank payment in the bank by that creditor on 1st April 2019. That means what? I am giving a check on 28th March, right? So I am recording that check on the payment side of the cash book on 28th March, right? But party is gone, creditor is gone for the present that particular check into his bank account on 1st April. That means what? 3 days are the difference. Here, if I want to know the balance as per passbook and the balance as per cash book on 31st March, then here the difference is there. Yes, because I am recording that particular check of rupees 1,000 that is issued by me. That's why I am decreasing my balance 1,000 with the 1,000, and bank is not decreasing because it is not paid that amount on behalf of me, right? Till the 1st April. So here the difference is that, and this is the causes, this is the reasons of the difference. And what we have to do here, we have to do whenever check issued but not presented for the payment is given into the question, we have to debit that particular amount into the bank reconciliation statement. Okay, so write down this. See that here explanation is given. Here the check of rupees 1,000 is drawn by the trader on 28th March. Immediately it will be recorded on the credit side of the cash book in the bank column. Therefore 28th March बैंक बैलेंस डिक्रीज बाय 1000, इट विल बी गिवन, इट विल बी रुपीज 3000. 4000 में से 1000 डिक्रीज हो गया तो 3000 हो गया, राइट? एज द बैंक पेज दैट अमाउंट ऑन 1st April, इट विल बी डेबिटेड टू द ट्रेडर्स अकाउंट ऑन दैट डे ओनली. तो वहां तक 4000 ही बैलेंस होगी, 1st April तक कोई चेंजेस नहीं होगा. 1st April को वो बैंक पे कर रही है, तो
1 अप्रैल तक उसकी बैलेंस 4000 एज इट इज होगी, नॉट बिफोर दैट. बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 28th March therefore will be maintained rupees 4000 only. A difference of 1000 is bank balance as per cash book and passbook arise, and the reason behind that being check drawn but not presented for the payment, and it is debited in bank reconciliation statement. Okay, now the third rule, direct deposited by customer into the bank. What means of that? New story. अगर कोई एक कस्टमर है, मैंने 2-3 बार बोला, अहमदाबाद का कस्टमर है, भावनगर में हम और अहमदाबाद का कोई कस्टमर है, वो बोल रहा है कि सर मैं आपको पेमेंट कर दूंगा. मैंने बोला नहीं, अभी मेरे को पेमेंट चाहिए, आप एक काम करो, वहां पे जब मैं आऊंगा तब आपको पेमेंट करूंगा. वो ऐसा बोल रहा है और मैं बोलूंगा कि नहीं मेरे को अभी पेमेंट चाहिए, तो क्या करेगा वो? एक मैं उसको बैंक अकाउंट की, मेरे बैंक अकाउंट की, एसबीआई के, यहाँ के भावनगर के बैंक अकाउंट की मैं उसको डिटेल भेजूंगा थ्रू द व्हाट्सएप, and he deposited in SBI. See, SBI is a core banking. Core banking means what? यहाँ पे जो अकाउंट दिख रहा है वो गुजरात के कोई भी कोने में या फिर इंडिया के कोई भी कोने में जाकर अगर आप देखोगे तो बैंक में, सॉरी, उसके कंप्यूटर में मेरा अकाउंट शो करेगा, राइट? सो कोर बैंकिंग मीन्स इफ आई एम डिपोजिटिंग एनी अमाउंट नॉट इन द गुजरात बट इन द तमिलनाडु और इन द दिल्ली, देन ऑल्सो it is deposited to my this Bhavnagar branch account. Okay, this is the core banking. Now here if the Ahmedabad, my debtor of the Ahmedabad is deposited rupees 10,000 into my bank account directly, right, from Ahmedabad, not here he is giving me 10,000 and I am depositing that check. No, this is not a procedure. Here sometime directly deposited by the customer in my account from Ahmedabad, right? So at that time I don't know that किसी ने मेरे अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया और उसने बताया नहीं है, या फिर उसने बताया मैं भूल गया, लिखना भूल गया. मेरे पास बहुत सारे कस्टमर थे, किसी का फोन आया, मेरे एक कस्टमर का, अहमदाबाद से कोई कस्टमर था, उसका फोन आया, मैंने आपके अकाउंट में 10,000 डाल दिए, ठीक है भैया चलो थैंक यू, और मैंने फोन रख दिया. बाद फिर से मैं कस्टमर में लग गया और मैं ये बात भूल भी गया कि किसी ने मेरे अकाउंट्स में, जो मेरा कस्टमर था, मेरे को पेमेंट करना था, उसने मेरे को पेमेंट कर दिया और मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज ऑलरेडी डिपॉजिट करवा दिया है वहां से डायरेक्टली, और मैंने वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया. तो क्या होगा? तो मेरे को रिकॉर्ड करना है जो भी मिस्टेक. सी, इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ओनली वन थिंग इज दैट किसी ने भी, या फिर कैश बुक में हमने, या फिर बैंक पासबुक में बैंक ने, जिसने भी एंट्री नहीं किया उसको एंट्री करनी है, बस, बाकी कुछ नहीं है. Whatever the entry is not done by the trader or by the banker, you have to just do it in the bank reconciliation statement, nothing else. If debit is not done, then please debit it. If credit is not done, then please credit it, nothing else. Here directly deposited by the customer, that's why bank is credited that amount into my account, bank account, right? Directly deposited by the party, by the customer into my bank account, then at that time bank is credited that amount into my bank account. So what I have to do? I have to debit it, but I forgot to debit it. I have to debit it and record it to the account. That means here I have to debit it in the account at the time of the depositing by the customer. Okay, so here you have to record it, just record it. Now see the rule 4 point. Directly deposited by the customer into the bank.
bank is credited, that's why we have to debit it. Bank always credited that amount which are credited, which are deposited into our account. That's why bank is credited, so we have to do just opposite, that is we have to just debit it. Okay, so these two mistakes are done by the bank. We are depositing the check, that is recorded in the cash book, but bank is not credited. We are issue the check, but it is not go for the presentation, that is not clear, right here. That's why these two transactions, first two transactions are not recorded by bank, okay, and this transaction is not recorded by the cash trader, that is by not recorded in the cash book. Okay, so here see the difference. Mistakes of bank. See, it's not same mistake, this is the procedure, but here at the same time, here if I'm recording that is trader recording that in the cash book, and bank is not recorded, that is mistake by the bank. Okay, so we have to do the opposite whatever do in the cash book. कैश बुक में हमने अगर चेक डिपॉजिट करवाया तो कौन सी साइड लिखेंगे, रिसीप्ट साइड, दैट इज डेबिट साइड, तो उसको क्रेडिट करना है, राइट। और अगर चेक इश्यू किया है तो हम कौन सी साइड लिखेंगे, पेमेंट साइड, तो हमको क्रेडिट साइड ऑलरेडी लिखा था, उसको अपोजिट करना है, मतलब डेबिट करना है, राइट। कैश बुक में लिखा है, बैंक में नहीं लिखा है, तो कैश बुक में उसकी क्या एंट्री होगी ये हमको पहले रिमेंबर याद करना है, ठीक है। व्हाट इज द एंट्री फॉर इन द कैश बुक फॉर चेक डिपॉजिटेड, right, that is on the debit side, so we have to credit it. And what is the entry for the check issued, that is on the credit side, so we have to debit it. And the same time check direct deposit any cash or any check by the customer to my account, that is bank recorded, I am not recorded it, right, so here bank is credited whenever directly any amount is deposited by us or by the customer, then bank is credited that amount, and I am not recording that, that's why I have to debit it. Just the opposite, bank is credited, that's why I have to debit it. Okay, now the fourth rule, interest, commission, charges, etc. recorded by the bank in the trader's account, that is the expenses for the trader. Interest, charges, commission levied by the bank to the customer, that is to the trader account. If the bank has debited or credited any amount of interest, commission, etc. in the trader's account, bank balance as per passbook increase or decrease accordingly. So we don't have to record all these points, right? See, we have to just defer this point. Here interest is credited by the bank as well as interest is debited by the bank. If I am taking bank OD, overdraft, then interest is debited by the bank, that is by expense. And if I have a balance 1 lakh more or more than any of the amount in my saving account, then bank give me the interest, and that is my income, right? So interest income is there, interest is also expense is there, interest is also debited by the bank or interest is also credited by the bank. At the same time, whenever the interest is credited by the bank, it is income for the trader. Interest is debited by the bank, it is expense for the trader. One, bank balance is increased by the credited interest, bank balance is decreased by the debiting of the interest. Okay, but the trader does not record in his cash book until he comes to know about it. At the same time, at the fixed timing, interest is debited or interest is credited by the bank directly. ये बैंक हमको बताने नहीं आएगी कि भाई हमने आपके अकाउंट में बैंक में इतने इंटरेस्ट की इतनी अमाउंट डेबिट की है या फिर इंटरेस्ट की इतनी अमाउंट क्रेडिट की है, वो बैंक हमको बताने नहीं आएगी, वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट कर देगी, मतलब आपको आपकी बैलेंस इंक्रीज कर देगी या फिर आपकी बैलेंस डिक्रीज कर देगी एट द पर्टिकुलर टाइम, जो उसका टाइम फिक्स टाइम है, वो टाइम वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ही डेबिट या क्रेडिट कर देगा आपके बैंक अकाउंट में. Yeah, so at the same time, I don't know the what amount and when the interest is credited or debited. I don't know. That is, trader is don't know about that.
it comes to know only when trader goes to the bank and print the passbook and see all the entries which is debited and credited and tally that with the cash book. At the same time, he knows that here the bank is credited or bank is debited some amount of interest in his account. Okay, so at that time here he has to record it. बैंक ने तो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है, तो बैंक ने वो बैलेंस इंटरेस्ट की अमाउंट से बैलेंस इंक्रीज कर दिया फिर डिक्रीज कर दी, मगर ट्रेडर को वो पता ही नहीं है। ट्रेडर तो जो पासबुक की एंट्री करवाने जाएगा बस वहां से देखेगा, वहां पर देखेगा तब पता चलेगा कि चलो ये भाई ये 270 रुपीज है, 270 का मैंने कुछ लिया ही नहीं है, मतलब मैंने कोई क्रेडिट भी नहीं किया, मैंने डेबिट भी नहीं किया, देखो कहाँ है, वहां पे पर्टिकुलर में लिखा होगा कि इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड। सो इंटरेस्ट मिला है मेरे को, ठीक है, चलो इंटरेस्ट इज माय इनकम। सो एट दैट टाइम आई हैव टू रिकॉर्ड दैट। बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया ऑलरेडी, बैंक ने बैलेंस इंक्रीज कर दी, सो आई हैव टू, बैंक ने क्रेडिट किया तो आई हैव टू डेबिट इट, राइट। और अगर बैंक ने डेबिट किया देन आई हैव टू क्रेडिट इट। ओके, सो एट द टाइम ऑफ सी द पासबुक we can see, or a trader can see that interest, commission, charges is recorded by the bank. So similarly, if the bank has debited any charges to the trader's account which are unknown to the trader, then the bank balance as per passbook will be less than that of the cash book, because bank charges recorded by the bank are still to be recorded in the cash book. वहां पे लिखा है, बैंक में लिख लिया है, पासबुक में बैंक ने एंट्री कर दी है, मगर हमको पता ही नहीं है कि उसके इतने चार्जेस लगे हैं, तो वो चार्जेस कैसे लिखेंगे? वो तो चार्जेस बैंक के पासबुक में देखेगा तब पता चलेगा कि उसको इतने इतने चार्जेस लगे हैं, और वो चार्जेस उसके बाद वो अपने कैश बुक में लिखेगा और उसकी बैलेंस डिक्रीज करेगा, राइट। दिस टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस आर pertaining to the amount of interest given by the bank or interest recovered by the bank on bank overdraft, interest, dividend or commission, etc. directly collected on behalf of the trader and are credited in passbook, or expenses, commission, etc. are debited by the bank in the passbook. Okay, so here the rules for that, two rules for that. Here interest, charges, commission debited by bank, बैंक ने डेबिट कर दिया है, हमको एंट्री करनी बाकी है, तो बैंक ने क्या किया है? Interest, charges, commission, all are expense for us because it is debited by the bank. So payment is done through the check, or see here payment of charges, payment of commission, payment of interest through our bank account is done. That's why here it is written on the credit side. That's why payment side of the cash book, right? So credit, we have to record it on the credit side. Whenever interest or any expense, interest, charges or commission levied by the bank or debited by the bank, we have to credit it. Okay, and the sixth rule, interest, commission, dividend, credited by the bank. If bank credited, we have to just debit it, nothing else. We have to just reverse it. Whatever the entry done in the trader's cash book or in the bank passbook, we have to just make the reverse entry of that. If bank debited, we have to credit it. If bank credited, we have to debit it. If trader debited, bank or bank not recorded. If trader recorded and bank not recorded, in that case, if trader debited, we have to credit it. If trader credited, we have to debit it. Just do the reverse entry. Only the one rule. If you are not remembering all these rules, then you just have to remember only one rule. You have to just reverse the entry whatever done in the situation.
अगर सिचुएशन में बैंक ने क्रेडिट किया है, हमने क्रेडिट करना भूल गए तो उसको डेबिट कर दो, बैंक ने डेबिट किया है, हम कुछ करना भूल गए तो उसको क्रेडिट कर दो, डेबिट हुआ तो क्रेडिट करो, क्रेडिट हुआ तो डेबिट करो, ऐसे वाइस वर्सा। अगर हमने कुछ किया है, बैंक करना भूल गया है, तो ट्रेडर ने डेबिट किया है तो क्रेडिट कर दो, ट्रेडर ने क्रेडिट किया है तो डेबिट कर दो, बस दूसरा कुछ नहीं। किसने क्या किया है नहीं देखना है, सिर्फ किसने डेबिट किया है तो हमको क्रेडिट करना है, किसी ने क्रेडिट किया है तो हमको डेबिट करना है। किसने भूल किए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? Who are making the mistakes, bank or trader, that is not important. Here the important thing is that what is the done, that is what entry is done in the bank or in the cash book, in the passbook or in the cash book. Whatever done, we have to just reverse it, just reverse. Debit, credit, credit, debit, nothing else. Okay, so here the fourth reason is over, and for fourth reason here two rules are there. We are recording these two rules. Okay, so now the next fifth point. Here the 12 points are there. We are just discussing 6 points in this lecture and the remaining 6 points in the next lecture. Amount recovered on behalf of a trader and credited to his account by the bank but not recorded in cash book. See, amount received on behalf of a trader and credited to his account by bank. What did by the bank? Bank is credited that amount but not recorded in the cash book. बैंक ने हमारे बिहाफ में किसी के पास से कोई भी अमाउंट ली है और हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दी, तो बैंक ने क्या किया है? क्रेडिट। हमको क्या करना है? जस्ट रिवर्स। हमको रीजन क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो कोई रीजन के लिए, वो कोई स्टोरी के लिए हमको कुछ करना नहीं है। हमको जस्ट प्रैक्टिकल सम्स करने हैं। प्रैक्टिकल सम्स के लिए क्या करना पड़ेगा? जस्ट रूल्स अप्लाई, फॉलो द रूल्स, राइट? सो व्हाट इज द रूल्स? Whatever done by the bank, we have to reverse it. Whatever done by the trader, we have to reverse it. Just we have to reverse in the bank reconciliation statement. Okay, so rule number 7. Amount recovered on behalf of the trader on behalf of the trader and credited to his account by the bank but not recorded in cash book. Bank is credited, so we have to just debit it, nothing else. So this is the rule. Whenever bank is any bank, see वो जो कस्टमर ने डायरेक्टली पेमेंट किया था ना हमारे अकाउंट में, वैसे ही है ये। बैंक ने किसी के पास से हमारी अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ अस, मैंने बैंक में बोला कि ये चेक लो, इस पार्टी के पास से मेरे को ये चेक कलेक्ट करना है। आई एम सी बैंक इज ऑल्सो गिविंग दिस सर्विस, दिस टाइप ऑफ सर्विस ऑल्सो। अगर मैं कलेक्शन के लिए भी मैं बैंक में आपको चेक दे सकता हूं, आपको ये कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में क्रेडिट करना है, ये मैं कलेक्शन के लिए दे सकता हूं, ये भी सर्विस बैंक दे रही है अभी, राइट? सो इफ आई एम गिविंग, और मैंने एक स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि भाई इतनी हर साल ये अमाउंट मेरे अकाउंट में आ जानी चाहिए ऑन बिहाफ ऑफ मी, और अगर नहीं आई है तो बैंक मेरे पास, बैंक वहां से जाकर कलेक्ट कर लेगी। आपने, मैं यहाँ पे हमारे कस्टमर ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी है कि आपको 15 मार्च को इतने पैसे हमको देने हैं फिक्स, और बैंक ने वो कलेक्ट कर लिए और मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर भी दिए। मैंने उसको पहले से इंस्ट्रक्शन दे रखी थी। अगर इफ आई एम गिविंग द इंस्ट्रक्शन बिफोर द डे here that you have to collect the same particular amount from one party and bank collect that and credit to my account, then it is credited my account, and that's why at the same time I forget to record that and I have to debit it, this one. Okay, see that
when bank has collected any amount on behalf of the trader and has credited to his account for which there is no information with the trader, then bank balance as per cash book will remain less than that of the passbook. For example, according to the instruction of the trader, मैंने बोला ना, उसने पहले से इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि मैं आपको 15 मार्च को इस पार्टी से इतने रुपीस लेकर आना है और मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देना है, उसके लिए जो भी चार्जेस लगेगा वो मैं आपको दे दूंगा. अगर मेरे को 15,000 चाहिए तो 15,000 के लिए जो 150 रुपीज अगर चार्जेस है तो चलो कोई बात नहीं, आपको वहां पे जाना है, 15,000 उसके बैंक अकाउंट में से लेकर मेरे बैंक अकाउंट में डाल देना है और उसके जो भी चार्जेस लगेंगे वो मैं आपको दे दूंगा. दैट मींस हियर if standing instruction is given by the trader to the bank, then at the same time bank do that and credit that amount in the trader's account. Okay, bank collects the amount of interest, commission or dividend on behalf of a trader and credits the same in his cash book, right, till he receives the information for the same from the bank. A difference arises between both the balance. Okay, बैंक ने क्रेडिट किया है तो हमको क्या करना है, रिकंसिलिएशन में उसको डेबिट करना होगा. ओके, द लास्ट रूल फॉर टुडे, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट लेफ्ट अनडिपोजिटेड इन बैंक. हमने एक डिपॉजिट करने के लिए चेक लिया किसी पार्टी के पास से, ये पहला जो था वो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक. सेम ट्रांजैक्शन हुआ, चेक हमने डिपॉजिट नहीं किया, बैंक किसी पास से किसी कस्टमर के पास से ले लिया, लेकर क्या किया, उसको डिपॉजिट करने के भूल गया, वहां पे बैंक में जाना ही भूल गया मैं, राइट. वो चेक मेरे, जैसे मैंने बोला था ना, जब मैंने चेक इश्यू किया तो किसी पार्टी के पॉकेट में ही 2 दिन रह गया, वैसे ही किसी पार्टी ने, सेम मेरे साथ भी हुआ, किसी पार्टी ने मेरे को अमाउंट दी, मेरे को चेक दिया, मैंने वो चेक ऑन द स्पॉट कैश बुक में राइट लिख भी दिया कि चलो भाई इस पार्टी से इतने पैसे मिले, रिसिप्ट साइड हमने 5,000 10,000 लिख दिया, मगर उसके बाद बैंक में डिपॉजिट करना मैं भूल गया, 2-3 दिन तक मेरे जो काम थे उसमें रह गया, और या फिर वहां पे बैंक में हॉलिडेज थी, जब उसने मेरे को चेक दिया बैंक में हॉलिडे चल रहे थे, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई एम नॉट रिकॉर्डेड, आई एम नॉट डिपॉजिटेड और लेफ्ट अनडिपॉजिटेड into the bank, and that's why the balance of bank as per passbook and balance of bank balance as per cash book is different, right? When a trader receives check, they are recorded on the debit side of the cash book in the bank column, yes, before they are deposited into the bank. Thereafter bank balance as per cash book increase, but later on due to the any reason, if they remain undeposited into the bank, the bank balance as per passbook does not increase accordingly. अगर हम बैंक में डिपॉजिट करने ही नहीं जाएंगे तो बैंक कैसे इंक्रीज करेगी हमारे अकाउंट से, राइट? सो वो हमारी मिस्टेक है, मगर बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया अभी, तो बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया तो हमने क्या किया था, रिसिप्ट साइड लिखा, मतलब डेबिट साइड लिखा. किसी के पास से कोई भी अमाउंट हमको मिली है, चेक मिला है, तो हम कौन सी साइड लिखेंगे, रिसिप्ट साइड, दैट इज डेबिट साइड लिखा है, बैंक ने कुछ एंट्री नहीं की है, तो हमको क्या करना है, जस्ट रिवर्स इट, हमने डेबिट किया उसको क्रेडिट कर दो, बस, बाकी कुछ नहीं, ठीक है. द नेक्स्ट रूल, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट लेफ्ट अनरिकॉर्डेड इन द बैंक. हमने डेबिट साइड लिखा, रिसिप्ट साइड, दैट्स व्हाई डेबिट साइड, दैट्स व्हाई हियर वी हैव टू क्रेडिट इट. Okay, so this is the rule. See here the 6 rules are over, here the remaining 6 rules and 1 or 2 extra rules are there also there. We are discussing that all the rules in our next session. So till that you have to just remember these all the rules. First rule I already given in my last session, and second to 8 all the rules are given in this session. You just have to read that and remember that all the rules, because on the basis of these rules we have to do the practical sums. Okay, so after that
first illustration, when we start our first illustration, in that case here we apply all these rules. So here you have to write down these rules in your example book. First rule you already done. Now the second to it. Here at that time I told you that you have to left 2 pages, 1 or 2 pages for the rules. Here in that pages first rule is already written. Now write down these 2 to 8 rules, and remaining 5 to 7 rules are also there. We are discussing or we are recording that rules in our next session. Okay, so till that you have to just remember, write all these rules. And the homework, exercise question number 1, you already written that, 2 also. Now only question number 3, today's homework, exercise 11, question number 3 only. You have to write down in your exercise book. That is 2 or 3 sentence question answer is given here in the question number 3, and you have to write down that question number 3 in your exercise book. This in the example book, this in your exercise book. Okay, so here I am complete my lecture. So thank you class, have a nice day, bye bye.